our entire course. And we've gone through the entire section of listening, reading, writing, speaking. We've done a lot of practice. We've done a lot of strategies and everything. Now tell me, which place exactly do you have a doubt? What do you want to do in the last session today? Come on, Sakar, Rajkumar, Ankit, tell me, what do you want to do in the last session today? I think you can tell about writing. Writing. What do you want me to tell you about writing? About working. Sorry? Just about writing comprehension, like how we have to do during the exam, Okay. or you can summarize. Okay. So see, basically what was the writing task that we discussed? We discussed that the two writing tasks. Task one is the report writing or a summary writing task where you are given a diagram or an image and you have to describe that in 150 words, not bringing in any outside information. Right? Whereas writing task two is you will be given a topic and you need to write about that topic in about 250 words, where I would preferably, I have suggested that you use examples, you use proper paragraphs to talk about your points, all of that. So this is what it is. Sorry, what did you say? I said the second task is a 250 word task. It's a longer task where you will be given a topic and you have to write about that. And I have very specifically asked you during the class, one of the strategies to scoring this is to using examples. So now we have to write. Sorry? We have to write 250 words or later. Not right now, but in the exam. Oh, okay. So, ma'am, now I am preparing for TOEFL. So both are similar, like IELTS or TOEFL. No, IELTS and TOEFL are not really very similar in all aspects. IELTS is again pencil and paper and a little more different, whereas TOEFL task 2, that is the 250 word task, is still similar, but task 1 is not similar. Task 1 is an integrated task where you have to read, listen, and then write. Because I have given some demo exams last year, so it was little difficult. And then now I am learning about IELTS, so it's a little different. But I don't have much experience of both of exams. You don't see much of a difference in both the exams. Well, see, it's everybody's own perspective of looking at it. Well, I would say that I'm not saying that IELTS exam is way different than TOEFL or the vice versa. What I'm trying to here say is that TOEFL exam, obviously certain portions are correct, whereas certain portions are way different than IELTS. You can't just use the same strategy to do it.
Are you getting what I'm trying to say? Yeah, yeah. That is what it is. I think today we don't have more people, so I think you can summarize that you taught us about IELTS, the main points of what you have to do during the exams or duration, time duration. See, it's a huge thing to summarize the whole exam in one session. Because when I sit down to summarize, I am not very sure of what all portions have you actually paid attention to. So if you tell me something with section specific, I can. Okay, let me think. I don't have any specific questions to any other people have they can ask. I'm sorry, your voice is not very clear. I don't have any specific questions regarding IELTS right Okay, now. Rajkumar, you don't Any, have. What about Ankit, Nelson, Saka? Yeah, ma'am. Huh. Am I audible? Yes. Yeah. Actually, I want to know the uh, time management regarding the IELTS. Uh, so, how to manage such type of questions in a limited time? Can you have some that idea? As in limited time, as in? Means because a reading question has 40 questions. Okay. Hmm. Uh, Yes. and writing pattern has also wait. Two Uh, tasks. Two tasks. Okay. And 60 minutes. So how to Yes. manage all such things? See, its time management is very simple. See, in the IELTS, it's very clear. So first, you will get your listening question paper and the answer sheet. The Okay. audio clip for IELTS will play for the entire hall, the entire exam hall together. So there will be one starting time and one stop time for the audio clip for everybody. It is not that I will start 5 minutes later and somebody has started 5 minutes ahead. Okay. Okay. Hmm. Following which, once your listening audio clip stops, you are given 10 minutes by the watch to transfer your answers from the question paper to the answer sheet. Those 10 minutes are not according to your watch. It's according to the watch running on the exam hall, which is you can see in front of you in a digital form. Okay. Okay. After the 10 minutes are over, they will take away your listening question paper and answer sheet, give you the reading question paper and answer sheet. And 1 hour, that is 60 minutes, will start from that minute. In 60 minutes, you have to solve all 3 passages. That is total number of 40 questions. 3 sections, no? In Yeah. readings, yeah. And also you have to finalize writing all answers from the question paper to the answer sheet in those 60 minutes. You don't get any additional time. Okay. Okay. Yeah. So once those 60 minutes are over, they will take away your reading paper and your question paper and the answer sheet paper. They will give you the writing question paper and the answer sheet. And again, 60 minutes will start. On 60 minutes over, they will take away both of those also. Okay. So it is not that you can, if you spend 5 minutes less in listening, you can use those 5 minutes in reading. If you use 10 minutes extra in reading, you can take 10 minutes less in writing. No. Each section is fixed and it runs that way. Okay. Doesn't matter if you're finished or you've not finished.
In 60 minutes in the reading section, let's say by the time the 60 minutes are over, you've only been able to do 30 questions. You will have to submit your papers with 30. You can't say 1 minute do or 2 minute do, I am writing, I'm in the last question, or just 1 minute do, meko fatafat answers are question paper se answer sheet mein dal do. Nothing. They don't listen to any of it. Okay. So it is always advisable, like in listening, we say that fine, you have 10 minutes, you can move your answers. But in reading, I always say that as you solve your answers, keep writing them on your answer sheet. You never know when the time can actually run. It's like you think that, oh, you just started the reading paper. It was just 1 minute back. I just started the reading paper. And, at the flick of your eye, 60 minutes are gone. And if you have done the whole paper and not written your answers in the answer sheet, sorry, you are in for a bad time, because you will not get additional 1 minute also to transfer your answers. And whatever is there on the answer sheet will be taken. Doesn't matter if they take the question paper also with it. But whatever is there in the answer sheet is the only thing that is considered. Ma'am, one question for writing task. Writing task is of two types, no? Second for essay and first for For the diagram or the image description. MCQs. Not MCQ. There's no MCQ in writing. Yeah. Graph-based question. Huh? Graph-based questions. Correct. Okay. But ma'am, in the reading also, second reading task also is based on the no. I think three passages, no, in reading section. Okay. And yesterday I saw, I go through one website. I think IELTS score.com. I think so. I saw a paraphrasing questions in the reading section also. So is it included in the reading section? Sorry, what is included? Paraphrasing question. See, paraphrasing question is paraphrasing is one of the tasks that you have to do when you're writing. There are no questions like that. You have to do a paraphrasing. There will be no specific questions or a list of questions. I saw that question in reading task. That's why I'm asking. Reading, yes, paraphrasing can be there in different forms of fill in the blanks, or in a form of answer short question or something. Okay. Hello, ma'am. Yeah. On which section we have to improve our skills? Means which section is important for IELTS exam? Listening, reading, writing, speaking out of 4. Each section you'll have to do well, because each section is scored separately, and then an average is taken to give you an overall score. Just give me 1 second.
Okay. मैम जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो राइटिंग टास्क में है या रीडिंग टास्क में है? Writing task. No. राइटिंग टास्क में, ओके ओके. The three passages are different in the reading task now. Yes, yes. Okay. Ma'am, ये matching sentence endings exactly what is it? Matching sentence endings. Can you explore? 1 minute explaining. Okay, so matching sentences, no, it's called something called match the heading. No, In sentence which what endings happens only. is I mean, no. In which happens is the passage is given to you in separate paragraphs, and each of these paragraphs are numbered as A, B, C, D, or 1, 2, 3, 4, depending on whatever the way of numbering is. And you are given a list of headings. So let's say there are 6 paragraphs, and they have given you 9 headings. So from the list of 9 headings, you have to pick up 1 heading each for one of the paragraphs. So 3 headings will be extra. So 6 will be used. So you have to select which 6 are going to be the correct headings. okay. So But how do here, you do it is you have to read the paragraph, summarize it in your mind, and then based on what you understand from the summary is you have to select the heading. no, actually, I'm asking the question is different from that. Matching sentence endings. Matching sentence endings is different. Why? That's what I'm asking now. Yeah, so they are basically they generally matching sentence endings don't generally come like this. They come as in fill in the blanks or complete the sentences on something like this. Okay. Uh, can you provide the more practice questions on reading and writing? I provided the IELTSscore.com. That is the best. Okay, okay. IELTS score now.
Any further questions? अंकित राजकुमार सखा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये आज हमारा लास्ट आईएलटीएस का क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग आईएलटीएस है वो आप अभी पूछ सकते हैं। अंकित, अंकित आवाज आ रहा है आपको मेरा? यस सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछिए। सर वैसे प्रॉब्लम तो मुझे कोई जान ही रहा है। मेरा प्रॉब्लम सर ऐसा जा रहा है कि आंसर्स गलत हो रहे हैं। ऐसे आई कैन से दैट मेरा थोड़ा पैराफ्रेजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखो, like कि मैं कैसे पैराफ्रेजिंग अपना में अगर पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो दो चीज करो। ओके A is, don't try to do what do you say, both time management and accuracy together. First, make sure that you understand the passage and you have your question answers accurate. Then work on your time management. अगर आप अपने ऊपर दोनों चीज का चाप दोगे कि मुझे टाइम भी 1 घंटे में करना है और मुझे सारे आंसर सही करने हैं, वो आपकी वीकनेस है, आप नहीं कर पाओगे। You will fall flat. ओके। और मैम राइटिंग सेक्शन के टास्क 2 में मैम राइटिंग में प्रॉब्लम जा रहा है। मतलब ऐसे आई कैन से प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मैं टॉपिक्स के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब सोच नहीं पाता कि मैं इस पर भी आगे क्या लिखूं और क्या लिखूं। वो एग्जांपल्स सैंपल कैसे आंसर्स पढ़ो, सैंपल आंसर्स पढ़ो। जितना सैंपल आंसर्स पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो मैम वो आप वेबसाइट दी आईएलटीएस करके उसके ऊपर अवेलेबल है मैम? मतलब अभी हाँ, टेस्ट उसमें वाली बहुत जो है। ieltsmentor.com में भी है, ieltscore.com में भी है। ओके ओके मैम, थैंक यू। बस मैम उससे मतलब बाकी सब तो मेरा मतलब एसएस कवर हो गया, लेकिन सिर्फ ये गलतियों की वजह से मेरा और नहीं बन रहा है मैम, वो ऐसी आप में गलतियों की वजह से। कर लोगे। हाँ, थैंक यू। राजकुमार, आपका कोई क्वेश्चन है? राजकुमार, क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन ये जैसे कि पूछ रहे थे तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है राइटिंग में और रीडिंग में। रीडिंग मेरा फास्ट नहीं है और राइटिंग राइटिंग में भी थोड़ा दिक्कत होता है मुझे। तो उसी से मेरा थोड़ा ये कि कैसे मतलब इम्प्रूव करें। तो आपका आवाज मैं समझ नहीं पाया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा कहना ये था कि रीडिंग और राइटिंग थोड़ा स्लो है मेरा। रीडिंग मतलब स्लो है, जब रीडिंग का ये आता है तो पढ़ने में थोड़ा स्लो होता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है और राइटिंग के लिए? देखो, रीडिंग के लिए क्या किया जा सकता है इज नॉट स्पेसिफिक। अगर आपका टाइमिंग स्लो है तो आपको समझना होगा कि क्या चीज में आपका टाइमिंग स्लो है। बहुत डेप्थ हाँ, ऑफ द पैसेज, रीडिंग में टाइमिंग थोड़ा लेट होता है। देखो बहुत डेप्थ ऑफ द पैसेज को पढ़ के फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको पैसेज क्या था ये नहीं कोई पूछने वाला। वही ये मेरा ये था। उसके लिए मैं न्यूज रीडिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं लगता है। वो सब करो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना डीप पढ़ना है, कितना डीप जाना है किसी चीज को समझने के लिए। आज मेरे लिए अगर एक सोचो पैसेज आता है, इंजीनियरिंग बेस्ड पैसेज, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे मे बी नहीं समझ, लेट्स से आया अबाउट
how does a radio frequency work? Now, I don't know what a radio frequency is because I've not been a engineering or a science student. There are two ways of me tackling it. Either A is I read it superficially just to answer questions, or B, I read it in depth to try and understand the concept also. Now, if I try to read and understand the concept, I will be at loss of time because I will not be able to read the other passages and solve the questions. So maybe if I'm interested in knowing what this concept is, I can do it later on my own as a research. Right now, my objective is that I should read it to such a level that I should be able to answer the questions. Got it? Yes. Ma'am, Yes. yeah, for each section, how many questions we have to solve? Means one for section one, like that. As in, Listening section. Okay. listening, each section has 10 questions. No. Then. How many sections in listening? Listening, there are 4 sections. So I'm just asking how many questions we have to solve for listening, reading, and writing. Listening, you have to solve 40 on 40 questions. 40 questions है तो 40 तो No. करना होगा ना. नहीं मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ. For practice help. प्रैक्टिस के लिए मैं कितने बोल रहा हूँ. प्रैक्टिस पेपर्स करने होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं कैसे बोलूं कितने प्रैक्टिस पेपर में आपको वो होगा. हो सकता है आपके लिए 4 प्रैक्टिस पेपर के बाद यू आर एबल टू स्कोर वेरी वेल. हो सकता है अंकित कैन फिनिश इट इन 2 पेपर्स. हो सकता है somebody else can do it in 1 paper. Somebody can take 10 also. और आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना करना पड़ेगा. ओके. क्योंकि आपका स्कोर आएगा तो आप उसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कौन से एरिया को आपको इम्प्रूव करना है. एक्चुअली मैं सेक्शन वाइज जा रहा हूँ. मैं पैटर्न वाइज नहीं जा रहा हूँ. मतलब लिसनिंग में अगर मुझे 4 टास्क मिल गए तो वो टास्क लेके कंप्लीट कर रहा हूँ एक दिन में. तो मैं वही हिसाब से पूछ रहा था. और रीडिंग में अगर समझो 3 है, 3 तो रीडिंग में उस दिन मैंने मैचिंग हेडिंग का किया था, बाद में ट्रू फॉल्स का किया था. तो ये ईच सेक्शन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ कि मुझे सेक्शन हैबिट कोई होना भी चाहिए. सेक्शन का तो आपको नहीं, कोई भी सेक्शन का तो आपको गारंटी नहीं है ना कि सेक्शन रीडिंग के सेक्शन 1 में आपको ट्रू एंड फॉल्स आएगा एंड सेक्शन 2 में नहीं आएगा. ऐसा तो है नहीं. वो तो ट्रू एंड फॉल्स कहीं भी आ सकता है. तो आपको सेक्शन वाइज की जगह स्किल वाइज जाना चाहिए. एग्जांपल पूरा एक साथ रीडिंग ओके. स्किल्स करना चाहिए या पूरा लिसनिंग, ऐसे करके पूरा स्किल. हाँ तो मैम वैसे ही कर रहा हूँ मैं. लिसनिंग में जितने टास्क है तो एक दिन में जितने मेरे को 4-5 होते हैं तो वो कंप्लीट करता हूँ. हाँ, और इससे ज्यादा इस मॉक पेपर पूरा मॉक पेपर करो, क्योंकि मॉक पेपर जब तक नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट गेट इनटू द हैबिट ऑफ. हाँ, go ahead. So you have to do mock papers because you need to get into an entire form of concentration of the entire paper. You need to work under pressure. Okay. Ma'am, so when I was doing a demo exam, so there are many different types of questions like
there will be 4 section about reading, writing, listening. Sorry? So how many means I am talking about there when I was giving demo exams, so there was Hmm. different types of questions. Like we have 4 criteria of English, like reading, writing, speaking. So in every section, how many types of question will be available? Like example, then we will give example for reading. मेरे को आपके how I am not understanding your question. Your voice is completely muffled. I can't understand your question clearly. uh, uh, मेरा ये कहना है कि आ रहा है आवाज मेरा? हाँ अब आ रहा है. हाँ, मेरा कहना ये था कि 4 सेक्शन है एग्जाम के, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो इन चारों सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि रीडिंग के हैं, तो रीडिंग के कितने क्राइटेरिया के क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 राइट करने हैं. एक के तो 40 टोटल कितने आएंगे चारों पैराग्राफ के? तीन पैसेज होते हैं ना रीडिंग में, तीनों हाँ। मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं. कोई में 12 होंगे, कोई में 13 होंगे, डिपेंड करता है, वो कोई फिक्स नंबर नहीं है. तो जैसे कि रीडिंग के लिए 40 है, फिर राइटिंग के लिए भी 40 होगा या उसका कैसे है? राइटिंग के लिए 40 कैसे होगा? राइटिंग डिफरेंट चीज है, राइटिंग टास्क दो अलग हैं. हाँ, तो उनका वही पूछना था कि मुझे कि राजकुमार, कितने हाँ, आपने हमारे ये आईएलटीएस के स्टार्टिंग वाले वीडियोस देखे हैं? हाँ, 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 थम उसमें हमने ये सब प्रियमदा ने पूरा ये वो बताया है, एक्सप्लेन किया है किस तरह से कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने पैराग्राफ आएंगे, राइटिंग राइटिंग के कितने हमें ऐसे लिखने हैं, कितने वर्ड लिमिट होगा, कितना हाँ, टाइम रहेगा। हाँ था उसमें। तो फिर आपको क्लियर नहीं हुआ उसमें? हाँ, क्या ठीक आप वही ठीक क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप? जी जी आप वो ठीक वीडियोस है, को ठीक है, वापस ही देखिए, आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. ठीक है मैम, ठीक है। हेलो प्रियमदा, हम्म. मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर सपोज कोई स्टूडेंट वहां पे राइटिंग से कोई राइटिंग का देना है, लिखना है, ऐसे लिखना है, और उसको टॉपिक टोटली ऐसा नया मिला है जिसके बारे में वो टोटली अनअवेयर है, तो वो उसको किस तरह से कर पाएंगे? देखो, अगर टॉपिक डिफरेंट है, सब समथिंग आपने कभी देखा नहीं है, आपके लिए नहीं है टॉपिक, देखो आप चेंज तो कर नहीं सकते टॉपिक, और ऑप्शन आता नहीं है कि आप दिस और दैट. वो एक ही टॉपिक होता है. आपको क्या करना होगा, उस टॉपिक को समझना होगा, उस टॉपिक को तोड़ना होगा, उस क्वेश्चन को तोड़िए छोटे छोटे पार्ट्स पर, उसको आंसर करने के तरीके से आप आंसर करिए. ओके, जैसे एग्जांपल देके कुछ समझा पाएंगे आप किस तरह जैसे से? फॉर एग्जांपल सिर्फ एक टॉपिक आया, ओके, what do you think is the impact of globalization in what is the impact of global warming in your day to day life? हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़े हैं, मगर डे टू डे के लाइफ के हिसाब से कभी हम सोचते नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट. और एग्जाम के समय सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम अटक जाते हैं. डे टू डे लाइफ क्या होती है, मतलब उस समय एक बार के लिए हम अटक जाते हैं. तो इसमें एकदम ब्लैंक होके कुछ नहीं लिखने से तो कुछ नहीं होगा. इससे अच्छा हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं. की वर्ड होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो हम एक पैराग्राफ लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. एक फिर दूसरा पैराग्राफ हम ट्राई करेंगे लिखने के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे आसपास क्या क्या चीजें में बदलाव हो रहा है, और अगर उससे हम एग्जाम्पल दे सके तो बहुत अच्छी बात है. फिर तीसरा चीज को हम देंगे. तो इफ दे आस्क यू डे टू डे लाइफ का इम्पैक्ट, ये जरूरी नहीं है आपके लिटरली खाने और पीने के इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है. मेरा डे टू डे लाइफ का ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है कि द वेदर इज गेटिंग सो हॉट कि because of the heat wave it is becoming very difficult to keep my health at bay. I don't feel hungry. This is like a called a day to day life impact. ओके, थैंक यू। अभी आप लोग पूछ सकते हैं किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो।
क्या हुआ, सबका हो गया? मेरे ख्याल से सबका हो गया, क्लास में स्टूडेंट्स कम होने की वजह से आई थिंक हो गया। मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपना ईमेल आईडी डाल देती हूँ, अगर आप लोगों को क्वेरी है या सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ही डालिए, वहीं मुझे मैसेज करिए। अगर मैं कोई काम से रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ बिकॉज मैं टेलीग्राम रोज नहीं देखती हूँ, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेरीज। आई विल सजेस्ट कि एक ही मेल में अपने मल्टीपल क्वेरीज का क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके 10 तो मेल ना भेजें बिकॉज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। मुझे अपने सैम्पल एसेज एंड ऑल ना भेजे लिखे हुए बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होगा उनको चेक करने का। आपको कोई बहुत स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक क्वेरी हो तभी मैसेज करें, वही बेटर होगा। मैंने काफी लिंक्स शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में टू प्रैक्टिस, मैं वही लिंक्स वापस से शेयर कर देती हूँ, उसी लिंक्स को आप प्रैक्टिस करें। मुझे मेल नहीं करेंगे पूछने के लिए कि आप मुझे और प्रैक्टिस करो, मेरे पास जो है मैंने सब दे दिया है और अभी वापस से मैं मेल पे ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक है, थैंक यू प्रेमना। थैंक यू राहुल। थैंक यू मैम। चलो ऑल द बेस्ट आप सभी को ऑल द एग्जाम बेस्ट। के लिए। आप लोग अपने अपने Thank रिजल्ट्स you for मुझे your जरूर guidance, बताना, ma'am. अपना रिजल्ट्स जरूर थैंक यू। बताना। थैंक यू। Sure, sure.